Okay, bachcho, up till now, we have studied, we started studying from the very first topic, that is atomic structure. And up till now, in the chapter atomic structure, first we discussed about the definition of an atom. Then we discussed about the definition of an element. Both of these definition comes for 2 marks in the exam. Then we moved on towards the atomic structure, where we studied about subatomic particles. Right? After studying about subatomic particles, we studied about electronic configuration. Another name for electronic configuration is electronic structure. In the last class, we were discussing how to make the electronic configuration of only first 20 elements of the periodic table. Because you are not supposed to make electronic configuration of all the elements which have an atomic number greater than 20. Right? We have 2 names for electronic configuration. One is electronic configuration, the other is electronic structure. Then in the last class, we started discussing about stability of atoms. So we will continue our lecture from the stability of atoms today. What is stability? Stability को हम कैसे define करेंगे? Whenever atom of any element needs to achieve stability, it means they have to complete their valence shell or outermost shell of electrons. अब क्या मतलब है इस बात का? Atoms can achieve stability by following 2 rules. One is duplet rule and the other is octet rule. Duplet rule is that rule where atoms get stable by having 2 electrons in their valence shell. Adami, beta, आपको share कर देंगे. I will share all the notes. Actually, we have already uploaded on the portal. If you see your portals, you can find the lectures of all the classes we have done so far. So last class we were writing the rules for stability. यहीं पे था, इसी पेज पे last class को हमने end किया था, यहीं से हम continue कर रहे हैं. Okay. So what is duplet rule? Having 2 electrons in valence shell. Another name for valence shell is outermost shell. You have to remember both the names because in exam वो कोई भी नाम दे सकता है इसमें से आपको. Having 2 electrons in valence shell is duplet rule. And what is octet rule? Having 8 electrons in valence shell. Some of the atoms, they get stable by just having 2 electrons in this valence shell. The rest of the other elements of the periodic table, they need to have 8 electrons in their outermost shell. Right? अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कम में खुश हो जाते हैं. ठीक है, इसी तरह से we have few elements like hydrogen, helium, lithium, beryllium and boron. These are the first 5 elements of the periodic table. They get stable by just having 2 electrons in their valence shell. Rest of all other elements of the periodic table, they need to have 8 electrons in their valence shell to get stable. Right? यहाँ तक clear है? Any questions so far? आगे बढ़े हम? चलो. देखो बेटा, if we see the electronic configuration of hydrogen, hydrogen has only 1 electron. So its electronic configuration is 1. It has only 1 shell. Helium has an atomic number of 2. So there are 2 electrons in the atom of helium. Right? From lithium, we can see lithium atom has 2 shells. And we were discussing that period number जो होता है, it tells us about the number of shells. All the period 2 elements, they have 2 shells. Lithium's electronic configuration is 2,1. Beryllium is 2,2. Boron is 2,3. See, if you see the valence shell of lithium, lithium has 1 electron. But in order to achieve stability, lithium follows a duplet rule. So lithium needs to have 2 electrons in its valence shell. तो अब ये किस तरह से स्टेबिलिटी अचीव करता है, आज हमें ये देखना है. See, we have a lithium atom. The symbol for lithium is Li. Whenever you are writing a 2-lettered symbol, make sure first letter is always capital and second letter is always a small letter. Atomic number of lithium is 3. It means it has 3 protons as well as 3 electrons. Its electronic configuration is 2,1.
Now, lithium can do one thing. In fact, lithium can do two things to achieve stability. क्या दो ऑप्शन है इसके पास? Either lithium should gain 7 electron in its valence shell to have 8 outermost shell of electrons. मतलब या तो lithium octet rule follow करे या duplet rule follow करे. अब in order to follow the duplet rule, basically the nucleus of lithium is not powerful enough to gain 1 electron. देखो उसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है ना. अब अगर वो एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन कौन करवाता है एटम को? उनका जो न्यूक्लियस होता है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स. अब लिथियम करता क्या है? इंस्टेड ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम लूजेस इट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल. जब लिथियम एटम, when lithium atom loses 1 electron, it is left with 2 electrons only. तो जो उसका पहले सेकंड लास्ट शेल था, अब वो बन गया है आउटर मोस्ट शेल. लिथियम इज फॉलोइंग अ डुप्लेट रूल टू अचीव स्टेबिलिटी. अब दुनिया को तो यही लग रहा है ना कि लिथियम का जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड इट गेट्स स्टेबल. बट इन डूइंग सो, व्हाट हैपेंड ऑन द चार्ज ऑफ लिथियम? See, if you see the lithium atom, it has 3 protons. The charge of protons is positive, इस पे +3 होगा, and charge of electrons is negative. If you find the net charge, you guys know what net charge is? Physics में जैसे आपने forces पढ़ा होगा, if on any object 2 forces are acting, so you find the resultant force, right? If they have opposite directions, तो आप उनको माइनस करते हो ना रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए. सिमिलरली यहाँ पे भी, in order to find the net charge or resultant charge, अब क्या करोगे? You have +3 due to protons and -3 due to electrons. So the resultant charge over the lithium atom was 0 because it has equal number of protons as well as equal number of electrons. But when a lithium atom has lost 1 electron, so what should be its proton number? लिथियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल स्टे सेम. इलेक्ट्रॉन लूज करा है, प्रोटॉन थोड़ी ना लूज करा है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल स्टे सेम एंड इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बिकम -2. नाउ इफ यू फाइंड द नेट चार्ज ओवर दिस लिथियम पार्टिकल, you get +3, -2, it would give you +1. It means the overall charge or the resultant charge or the net charge over the lithium atom is +1. We write +1 like this. We do not have to write 1. If we just write positive and no number with it, it means by default it is 1. अब हम इसको लिथियम एटम नहीं कह सकते. एटम वो होता है जब चार्ज 0 होता है. अब ये क्या बन गया है? दिस इज लिथियम, दिस इज नोन एज लिथियम आयन. बस एटम हटा के इसकी जगह पे क्या रख दोगे? आयन रख दोगे. दिस इज नोन एज लिथियम आयन. इफ यू सी अनदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, लेट्स से सोडियम. Sodium has an atomic number of 11. It means a sodium atom has 11 electrons. If we make the electronic configuration of sodium atom, it would be 2, 8, 1. First shell will have 2 electrons. Second shell will have 8 electrons because second shell cannot hold more than 8 electrons. Total we have to add 11 electrons. So the last shell will get 1 electron. 11 हो जाएंगे ना. 2 + 8 + 1 is 11. If you find the resultant charge over sodium atom, so it has 11 protons and the charge over protons is positive and 11 electrons. The charge over electron is negative. So the net charge over sodium atom should be +11, -11, it would be 0. Clear? Now, in order to achieve stability, sodium atom can either gain 7 electrons or it loses 1 electron. अब बेटा बात ऐसी है, in order to gain 7 electrons, सोडियम एटम को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो कि सोडियम से नहीं होता. नहीं होने का क्या मतलब है? देखो, न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज पॉजिटिवली चार्ज. What holds the electrons around the nucleus is the positively charged protons present in the nucleus. अब अगर इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है या न्यू इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, तो दैट हैज टू बी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स दैट नीड टू डू सम हार्ड वर्क.
तो सोडियम के न्यूक्लियस में देयर आर नॉट इनफ प्रोटॉन्स के वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, लेकिन सोडियम को शो करना है दुनिया को कि वो भी स्टेबल हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या करता है? सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ इट्स सेकंड लास्ट शेल बिकम्स इट्स लास्ट शेल। अब जब लास्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो शेल ही खत्म हो गया ना, और जब शेल खत्म हो गया तो इट मींस के उसका जो सेकंड लास्ट शेल था अब वही लास्ट शेल है। तो सोडियम एटम नाउ हैज बिकम सोडियम आयन। We cannot call it a sodium atom now. We will call it sodium ion. Right? And what about the charge over sodium ion? If you see, the number of protons were positive 11, the number of electrons are negative 10. So the net charge over sodium ion is positive 11, negative 10. That would give you positive 1. Got it? So whenever an atom forms an ion, it gets stable. Some atoms, they get stable by having only 2 electrons in their valence shell. Like we studied about lithium, it gets stable by having 2 electrons in its valence shell. Rest of the other atoms, apart from lithium, beryllium, boron, hydrogen, and helium, they all need to have 8 electrons in their valence shell to get stable. It means they all follow the octet rule. Abdullah, it does not just loses electrons by itself. It happens when sodium atom needs to react. Obviously, जब chemical reaction होगा तभी वो lose करेगा. It's not like कि उस सोडियम का आज मूड हुआ, चलो आज स्टेबल हो जाते हैं, तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया. नहीं, ऐसा नहीं होता. It only happens when a chemical reaction happens. Why are we revising? It's always good to revise, Vanya, to strengthen your concepts. Actually, in the month of June, we were doing some foundation classes. And now from July onwards, we are having our regular classes. ठीक है, तो ये जो आज की क्लास हाफ ऑफ अ क्लास है, इसमें बस ये पुराना काम आएगा. Now you will be studying a new topic, isotopes. ठीक है वानिया? Yes, Alize, we can do more examples. Now take an example of magnesium. Magnesium is from group 2. Let's take an example of a group 2 element. A magnesium atom has 12 protons. It means it also have 12 electrons. If you make the electronic configuration of magnesium, it would be 2, 8, 2, right? If you find the net charge over magnesium atom, that would be positive 12 and electrons are negative. So it would be negative 12. The net charge would be plus 12, minus 12, it would be 0. However, when a magnesium atom needs to get stable, it needs to have 8 electrons in its valence shell. So magnesium क्या करेगा? It will lose 2 of its electrons from the valence shell and its electronic configuration would become 2, 8. अब magnesium के valence shell में 8 electrons है, जो उसका second last shell था, now वो last shell बन गया. But in doing so, a magnesium atom will get a charge of, क्या charge आएगा इस पे? Can you find the net charge? Positive 12 protons, negative 10 electrons, it would get a charge of 2 positive. We will write 2 positive like this. We will write the number first and then we will write the sign. Yes, Zara, which element will lose electron and which element will gain electron, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ. Right now we are discussing all the examples of all the elements which are losing electrons. All group 1 elements, they lose 1 electron. All group 2 elements, they lose 2 electrons. If we see an example from group 3, like aluminium. Let's take an example of group 3. An atom of aluminium. Aluminium has an atomic number of 13. If you make the electronic configuration of aluminium, that would be 2, 8, 3. Aluminium atom has 3 valence electrons. In order to achieve stability, aluminium atom loses these 3 electrons from its valence shell. Now the second last shell of aluminium atom becomes its last shell. And it gets a charge of 3 positive. Why it gets a charge of 3 positive? Because it has 13 protons, which are positive. Now after losing 3 electrons, the number of electrons left are 10 electrons. If you find the net charge over aluminium, it would be positive 13, negative 10. That would give you positive 3. Yes, metals always loses electrons. In order to react and to achieve stability, all the elements from group 1, group 2, and group 3, they lose electron.
Now let me summarize. All group 1 elements, they all have one valence electron. So in order to achieve stability, see, we can only make the electronic configuration up till potassium for group 1 because rubidium has an atomic number of 37. We cannot make the electronic configuration of rubidium, but हमें ये पता है कि group 1 का है तो its valence shell must have one electron. Similarly, cesium के valence shell में भी one electron होगा, francium के valence shell में भी one electron होगा. All group 1 elements, in order to achieve stability, they always lose one electron and they all get a charge of positive 1. तो अब आपको ये बात याद रखनी है. If you have a copy of periodic table in front of you, उसी के ऊपर लिख लो. ठीक है, all group 1 elements, they always form the charge of positive 1. They always lose one electron. Now coming towards group 2, all group 2 elements, they always lose 2 electrons to achieve stability and they get a charge of positive 2. For group 3 elements, all group 3 elements, they lose 3 electrons and they get a charge of 3 positive. Now we won't discuss about group 4. For now, अभी group 4 को हम discuss नहीं करेंगे. अभी ignore करेंगे group 4 को because group 4 elements, they neither lose nor gain electron. They do another phenomena which is known as sharing of electron. They also achieve stability. Stability सब achieve करते हैं except for all of these elements from group 8 because group 8 elements, they either have 2 electrons like helium, वो already duplet rule follow करके बैठा हुआ है. Neon, argon, krypton, all the group 8 elements. Why they are in group 8 in first place? Because they have 8 electrons in their valence shell. तो वो तो already stable होते हैं. They neither lose nor gain electron. However, group 4, देखो group 8 को stability achieve करनी ही नहीं है. They are already stable. Group 4 को stability achieve करनी है, but they achieve stability by sharing of electron. इसलिए हम group 4 को अभी discuss नहीं कर रहे. But for now, अब ये याद कर सकते हो कि group 4 elements, they can lose 4 electron as well as they can gain 4 electron. But जरूरत नहीं है अभी. Group 3 तक याद रखो. Now what about all the elements in between group 2 and group 3? We name them as transition metals. They also loses electron. ये भी electron lose ही करते हैं. They also form a positive charge. But as they are not given any group number, we cannot say for sure what charge they will form. ये ना एक बड़ा unique phenomena follow करते हैं. Like iron sometimes, iron atom sometimes in some reactions, iron loses 2 electrons and gets a charge of 2 positive. Sometimes iron atom loses 3 electrons and gets a charge of 3 positive. So they form variable charges. Their charges keeps on changing from reaction to reaction. Similarly, a copper atom can form a charge of positive 1. It can also form a charge of 2 positive. अब हमें कैसे पता चलेगा when copper is making a charge of 2 positive, when it is making a charge of +1? अब आपको ये नहीं पता लगेगा. ये given होगा question में. For example, if he wants to use the iron 2 positive, he will write it like, he will give you iron 2. Iron लिख के Roman में bracket में he will write 2 with it. It means iron here is forming a charge of 2 positive. If he has written copper 1, it means copper is forming a charge of positive 1. Similarly, we have another transition metal which is chromium. Chromium has a symbol Cr and chromium can also form a charge of 6 positive. So he will write it like this, chromium 6. It means chromium has a charge of 6 positive. सही है? Alize, you want me to give more examples for metals forming ions? Or is that enough? अभी बताओ मुझे यहां तक कोई प्रॉब्लम है? No? आगे बढ़े? See, when an atom forms an ion, either it forms a positively charged ion or negatively charged ion. Oh, Abdullah, no question is a silly question, beta. Feel free to ask anything. But you can, बहुत बड़ा लिख दिया है, तो let me read it out. How does transition element has a variable oxidation state? Doesn't follow the octet rule? Like how can copper make +2 +1 if it stabilizes? Oh my god. Beta देखो, transition metal, they follow the octet rule, but there is a slight difference when you make the proper electronic configuration of copper.
एक्चुअली देखो बेटा, आप लोग अभी छोटे हो, ठीक है। आप लोगों के एज के हिसाब से जो सिलेबस कंटेंट डिजाइन हुआ है, why we are only supposed to make the electronic configuration of the first 20 elements, because from scandium, which has a proton number greater than 20, actually the rule you have learned to make the electronic configuration does not apply to those elements. It doesn't mean कि हम रूल गलत पढ़ रहे हैं, हम रूल हाफ पढ़ रहे हैं, हाफ अभी नहीं पढ़ रहे। हाफ कब पढ़ेंगे? हाफ ए लेवल में पढ़ेंगे, ठीक है। Why we are doing this? To simplify the things, to keep things simple for you, to keep things easier for you. अभी छोटे हो ना, इस वजह से। तो अब्दुल्ला, copper, yes, copper achieves stability, but it can achieve stability by forming two ions. Either it can form a +1 ion, it will be stable in that oxidation state. If you know then what oxidation state stands for, because you have already written it in the text, okay. If it forms +2 charge, again it is stable. But yes, आपका वो जो ऑक्टेट रूल वाला मामला है ना, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अब्दुल्ला, दिमाग चल रहा है, ठीक है भाई। किसी का और कोई क्वेश्चन है? ओके, ऑल these elements from group 1 till group 3 are generally known as metals, and all atoms of all these elements, in order to achieve stability, they always lose electrons, and whenever an atom gains lose or gains an electron, they form an ion. We have two types of ions. Whenever atom loses electron, they get a positive charge, and positively charged ions are given a special name, which is known as cation ions. So all the elements from group 1 till group 3, they always form cations. It means they always lose electrons. Now if you consider the elements from group 5 till group 7, we are not discussing group 4 right now. We will discuss it in the chapter chemical bonding. As far as group 8 is concerned, group 8 is already stable. उसको stable होना ही नहीं है, तो group 8 की इसलिए बात नहीं कर रहे। Now, taking an example from group 5, let's say we have nitrogen. Nitrogen has an atomic number of 7, its electronic configuration is 2,5. So, if nitrogen atom needs to get stable, we have nitrogen atom, its atomic number is 7, its electronic configuration is 2,5. Nitrogen could also follow the duplet rule. Nitrogen, if loses 5 electrons from its valence shell, then its second last shell would have 2 electrons, right? So stability तो ऐसे भी achieve हो सकती थी. But nitrogen atom does not loses an electron. Nitrogen atom कहता है I already have 5 electrons in my valence shell. He just needs how many more electrons? 3 more electrons to get stable. तो वो कहता है कि मैं क्यों लूज करूं, मैं थोड़ा सा हार्ड वर्क करके ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता। अभी जो वर्ड हार्ड वर्क है ना, इसका थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो आपको समझ आएगा कि हार्ड वर्क से क्या मतलब है मेरा। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन अराउंड इट। देखिए वो न्यूक्लियस की पावर होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जिनके न्यूक्लियस में इतनी पावर नहीं होती टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो लूज हो जाते हैं, ठीक है, वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए लूज कर देते हैं। बट द नाइट्रोजन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे इसको? इट गेन्स 3 electrons because it already has 5 electrons in its valence shell. So a nitrogen atom gains 3 electrons and its electronic configuration becomes 2,8. Now its valence shell has 8 electrons. दुनिया को लगता है नाइट्रोजन स्टेबल है, but in doing so, what happens on the nitrogen atom? If you see the nitrogen atom, it had 7 protons and 7 electrons. If you find the net charge or the resultant charge over the nitrogen atom, it would be 0. +7, -7 is 0. However, when a nitrogen atom gains 3 electrons to achieve stability, so its number of protons stays same. Electron gain कर रहा है ना, proton थोड़ी कर रहा है. So number of electron becomes -10. So the net charge over nitrogen particle would be +7, -10. That would give you -3. So the nitrogen atom gets a 3 negative charge. अब हम इसको नाइट्रोजन एटम तो नहीं कहेंगे ना, एटम तो वो होता है when
we have a zero charge over it. Now it has a charge of 3 negative. अच्छा, एक चीज मैं बताता हूं, कभी कभार हम 3 नेगेटिव जल्दी में ना, वैसे तो हम यूं लिखते हैं, वी राइट द नंबर फर्स्ट देन वी राइट द चार्ज, बट समटाइम्स इफ यू राइट -3 तो ये गलत नहीं है, इट्स ओके, बट द राइट वे इज टू राइट लाइक दिस, नंबर फर्स्ट एंड देन यू राइट द चार्ज, ठीक है। बट इफ यू हैव रिटन इट लाइक दिस -3, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, गलत नहीं करेगा आपका आंसर, ठीक है। तो कभी कभार मैं भी लिख दूंगा, आप भी लिख देना, कोई मसला नहीं है, बट द राइट वे इज दिस फर्स्ट वन, ठीक है जी। मूविंग ऑन, अब क्या हम इसको नाइट्रोजन आयन कहेंगे? देखो, वेन एवर अ ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ट्रांजिशन मैटर्स और ग्रुप 3 they loses electron and their name changes as from sodium atom it becomes sodium ion. However, whenever an atom gains electron it forms a negatively charged ion, बनेगा तो ये ion, तो इसके आखिर में you will write ion of course. However, there is a slight change in the name of this spelling. We won't call it nitrogen ion, इसकी spelling क्या हो जाएगी? We would call it a nitride ion. Let me write it. This is known as nitride ion with IDE in the end. This is my D. Yes, IDE in the end. This is nitride ion. अब ये स्पेलिंग कैसे चेंज होगी, हमें किस तरह से याद रखना है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। Let's take another example from nitrogen is from group 5, right? So group 5 elements, they get a charge of 3 negative. Let's take another example of group 5. Below nitrogen we have phosphorus. A phosphorus atom has 15 protons. If you make the electronic configuration of phosphorus, it is 2,8, 5. So in order to achieve stability, a phosphorus atom will gain 3 electron and its electronic configuration would become 2,8, 8. Now a phosphorus atom also have 8 electron in its valence shell. अब इसका जो नाम होगा ना, it would be phosphide ion with IDE in the end, ठीक है, आखिर में we will have IDE in the end. ओके, आ गया क्वेश्चन वाला नाइट्रेट? हाँ आ गया, ठीक है। अलीजे अभी करते हैं उसकी बात। अब्दुल्ला, मैं वेट कर रहा था इस क्वेश्चन का। नाइट्रेट और नाइट्राइट, यस, नाइट्रेट इज अ डिफरेंट आयन, उसकी बात हम थोड़ा आगे चल के करेंगे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द आयन विद IDE इन द एंड, IDE, D for doll, right? Any atom of any element from the periodic table, whenever it is forming a negative ion, it will always form an ion with IDE in the end. Abdullah, nitrate is something else. Nitrate is not a single atom, it has multiple atoms, like NO3 -1 is a nitrate ion. अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन एलिमेंट्स की जो periodic table में प्रेजेंट हैं, सिर्फ सिंगल एटम फ्रॉम द periodic table, ठीक है अब्दुल्ला। तो हमें कैसे पता चलेगा whenever we have to write a nitrate ion or nitride ion, जब IDE in the end है, it means we are dealing with a nitrogen atom that has formed an ion, but if it has written nitrate ion तो वो फिर हमें याद करना पड़ेगा, जो हम आगे चल के याद करेंगे, ठीक है भाई। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम ग्रुप 6। ग्रुप 6 में ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 8, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6. In order to achieve stability, an oxygen atom gains 2 electrons, right? Because it already has 6 electrons in its valence shell. In order to complete its octet, it will follow an octet rule and it will gain 2 electrons in its valence shell. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? That would be 2,8. But in doing so, an oxygen atom will get a charge of 2 negative. Okay, 2 electrons बढ़ा है ना? Whenever an atom is gaining 1 electron, it will get a charge of -1. When an atom is gaining 2 electrons, it will get a charge of 2 negative. And when an atom is gaining 3 electrons, it is forming a charge of 3 negative. तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा? This is oxide ion.
अब ये IDE इन दी एंड आ रहा है, अभी परेशान नहीं हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या स्पेलिंग बनेगी, वो मैं भी याद करवा देता हूं खुद ही आपको. So all group 6 element, whenever they gain 2 electron, they get a charge of 2 negative. Similarly, if we take an example from group 7, ग्रुप 7 में आप बताओ कौन सा एग्जाम्पल लें, किस एलिमेंट का लें. प्रोडक्ट टेबल दिखाऊं? प्रोडक्ट टेबल साथ लेके बेटा करो बेटा सारे. We have fluorine, chlorine, bromine, iodine. We cannot make the electronic configuration of bromine. Iodine, we cannot make the electronic configuration of iodine, Abdullah, because iodine has an atomic number of 53. ठीक है, क्लोरीन ले लेते हैं. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 20 से कम है, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं. So chlorine atom is 2,8,7. It has to gain 1 electron to complete its octet. इस पे चार्ज आ जाएगा -1. -1, you are not supposed to write 1 with it, but let's say if you write 1, it's okay, चल जाएगा, गलत नहीं है. So a chlorine atom becomes chloride ion with IDE in the end. Right? We cannot say it chloride ion. We cannot say it chlorine ion. हमेशा chloride ion होगा. देखो भाई, दो बातें बताई हैं. How atom forms an ion? There are two types of ion any atom can form. Either it will form a positively charged ion, which is known as cations, by losing electrons. All group 1 elements, they lose 1 electron and they get a charge of +1. सारे group 2 elements, they lose 2 electrons to form a charge of +2. All transition metals, they also lose electron, but we cannot decide their charges. वो हमें बाद में खुद बताएगा वो. All group 3 elements, they all lose 3 electrons to get a charge of 3 positive. Group 4 ko we are not discussing group 4 right now. For group 5, all group 5 elements, atoms of all group 5 elements, they gain 3 electrons and they get a charge of 3 negative. याद रखनी है ये बात. Atoms of all group 6 elements, they gain 2 electrons and they get a charge of 2 negative. Atoms of all group 7 elements, they gain 1 electron to form a charge of -1. And group 8 elements, they do not lose or gain electron. So ये ion बनाते ही नहीं. So we have two types of ions, cations and anions. Anions are negatively charged ions, and they get a negative charge by gaining electrons, right? Clear है यहाँ तक? From group 1 till group 3, these elements are known as metals and they always form cations. From group 5 till group 7, these elements are known as non-metals. In fact, group 4 and group 8 is also a non-metallic group, but right now we are not discussing its charges, so अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे. So they all gain electrons to complete their octet and they form a negatively charged ion, which are known as anions, and positively charged ions are known as cations. Yes, Abdullah, you would be studying electronic configuration of iodine in A11. पढ़ोगे वहां पे, यहाँ पे नहीं पढ़. क्लियर है भाई यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? पीरियोडिक टेबल पे देख लो जल्दी से. पीरियोडिक टेबल पे मार्किंग्स कर लेना. अगर अभी नहीं है पीरियोडिक टेबल, तो लेटर ऑन मेक श्योर कि यू जॉट इट डाउन एवरीथिंग दैट आई एम राइटिंग राइट नाउ. ठीक है, all group 1 element, they form a charge of +1, group 2 +2, group 3 +3, group 4 we are not discussing right now, group 5 -3, group 6 -2, group 7 -1. ठीक है, group 8 they do not lose or gain electron, they do not form an ion. Now coming towards the spellings of the negatively charged ion. देखो बेटा, in group 5 you have nitrogen. Whenever a nitrogen atom gains 3 electrons and forms an ion, it is known as nitride ion. The spelling of nitride ion is NITRID. You have to remember that. याद रखना है. You have to cram it. रट्टा मारना है. याद रखना पड़ेगा. Phosphorus atom,
When it gains 3 electrons, it forms phosphide ion. जब ये आयन बना लेगा तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी फॉस्फाइड, ये भी याद रखना पड़ेगा. What about arsenic? Will arsenic form an ion? Yes, it does. But do you have to remember the name of the anion of arsenic element? No, you're not supposed to remember that. From group 5, you just have to remember the spelling of the two ions, nitride ion and phosphide ion. Yes, arsenide, but you are not supposed to remember that. इसी तरह antimony, उसका भी याद नहीं करना. So from group 5, just nitride and phosphide. From group 6, you have oxygen and you have sulfur. When an oxygen atom forms an ion, it gets a charge of 2 negative and its spelling becomes oxide, O-X-I-D-E. For sulfur, it becomes sulfide. The charge it gets is 2 negative because it is a group 6 element. And the spelling is SULFIDE. ये याद रखनी पड़ेगी. From group 6, आपको सिर्फ दो ही याद रखना. Group 7 से you have to remember fluoride ion, chloride ion, bromide ion, iodide ion, and acetatide ion. From group 7, all group 7 atoms of all group 7 elements, they get a charge of -1 because they all are from group 7. And the name of fluorine ion is fluoride. वो fluoride toothpaste का ad सुना होगा ना? Name of chlorine ion is chloride ion. Bromine becomes bromide ion, and iodine becomes iodide ion, and astatine becomes acetatide ion. That's it. बस ये याद करना है. I think अभी याद हो गए होंगे. सेलेनियम का याद नहीं करना. Abdullah is not seleniumide, is something else, but आपको याद नहीं करना. You just have to remember all of these ions, इनकी spelling जो मैंने यहाँ पे अभी लिख दी. ठीक है भाई, हो जाएंगे याद. I think अभी कर लो क्लास में याद. लास्ट आपका एक छोटा सा क्विज हुआ था, right? And you guys all performed very well in it. I was so happy seeing the marks. I think nobody got less than 9. ऐसे ही था. Yes, ऐसे ही था. So you all are good students. चलो भाई, अब आगे बढ़े. तो ये तो हो गई हमारी स्टेबिलिटी. ये आगे दोबारा आएगी अभी बहुत सारे रिएक्शंस में. ITE, all the ions with having ITE in the end and ATE in the end, उनकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे ना. We are just discussing all the negative ions with have IDE in the end. Basically, if you see the elements of the periodic table, whenever an atom of any element from the periodic table forms a negatively charged ion, it always gets IDE in the end. If you are dealing with a single nitrogen atom, it will form a nitride ion. If you are dealing with a single oxygen atom, it will always form a oxide ion. However, when these non-metals, they are combined together and then they get an overall charge, उसके बाद हम उनको फिर स्पेलिंग में 8 या ITE 8 लगाते हैं. And that we will gonna discuss in formula making, in element mixture and compounds. तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अब्दुल्ला उसके लिए. चलो आगे बढ़े. अभी I have a question from you guys. पहले तो एक काम करते हैं. Let's discuss about isotopes. Does anyone of you know the definition of isotope? How do we define isotopes? This definition comes for 2 marks. Sometimes it comes for 3 marks. Sometimes it comes for 2 marks. So we will write the definition for 3 marks. चलो कोई बता सकते हैं? What are isotopes? First, let's write the definition. फिर हम समझते हैं. Elements that have the same amount of protons but different amount of neutrons. Mariam, slightly wrong. An atom which has the same number of electrons and protons but different number of neutrons. Yes, Alize?
but still something is missing, which have the same atomic number. Who have the same atomic number? Atoms of the element. Atoms of the same elements having same number of protons but different number of neutrons. Atoms to lagao saath. Yes, Anik, very good. Isotopes are the atoms of the same element having same number of protons but different number of neutrons. If they have same number of protons, obviously they will have same number of electrons. ठीक है भाई, let me write it for you. These are atoms of an element having same number of protons but different number of neutrons. Or we can also write the definition with other wordings. Both are acceptable. You can also write this definition as atoms of, instead of writing of an element, it's better you write atoms of the same element. Let's write atoms of same element. So atoms of same element having, if their number of protons are same, it means the atomic number is also same. Atoms of same element having same atomic number, but if the number of neutrons are different, it means their nucleon number must be different, because nucleon number is the sum of protons and neutrons. Protons are equal, but two atoms of the same element, if they have different number of neutrons, it means they must have different nucleon number, but different nucleon number, right? Atoms of the same element having same number of protons. So if you have not written atoms of the same element, अगर आपने atoms नहीं लिखा ना बेटा, तो 1 mark तो वैसे ही चला जाता है. Having same number of protons but different number of neutrons. So these three keywords will give you 3 marks. Sometimes it just gives you 2 marks. He counts same number of protons but different number of neutrons is just 1 mark. No, ion cannot be isotopes. Definition में the first word is atoms. So we cannot see an ion to be an isotope. Yes, obviously, Abdullah, if the nucleon number is different, it means their mass number is different. Another name for the nucleon number is the mass number. In fact, if you want to write atoms of the same element having same atomic number but different mass number, that is also acceptable. Got it? Abdullah, every ion is not an isotope, because whenever an atom forms an ion, their number of protons stays same. Their number of neutrons also stays same. Right? ये देखो ना, sodium has 11 protons. Sodium atom has 11 electrons. Sodium atom has 12 neutrons. If you see the mass number of sodium, that is 23. 23 minus 11 would give you 12. Whenever a sodium atom forms an ion, its number of protons stays same. Okay, number of electrons changes, but number of neutrons also stays same. So how come you are saying that atom and an ion can be an isotope of each other? They already have same number of neutrons. Atoms is something else. Isotopes, let me just give you an example, पे समझ आ जाएगा. देखो भाई, let's say if we are dealing with hydrogen element. हमारे पास एक हाइड्रोजन एलिमेंट का सैंपल है, उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स होंगे. एलिमेंट कैसे बनता है? बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स बनते हैं. आमना, ये कौन सा आयन है? आयन विद डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर बी एन आइसोटोप? नो बेटा,
हम आइंस को आइसोटोप कह ही नहीं सकते, हम आइंस को आइसोटोप्स कह ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आइसोटोप की डेफिनेशन स्टार्ट ही कहां से हो रही है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन में फंसेगा। वो एक एटम दे देगा और एक आयन दे देगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे देगा और पूछेगा कि आर दीस टू आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, एंड यू वुड से दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, they have different number of neutrons, so they must be isotopes of each other. But you just forget the first condition. For any two particles to be isotopes of each other, first of all they should be in their atomic state. The atom and ion can never be an isotope of each other. ठीक है, आगे ये बात बहुत बार होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन से बार बार फंसाता है। See, a hydrogen element, if we see the hydrogen atom, a hydrogen atom is identified by its atomic number, which is 1. But let's say मैंने आपको ना हाइड्रोजन का सैंपल दे दिया, and I asked Amna to check whether all of these atoms are of hydrogen element or not. तो आमना, how would you ensure कि वाकई में सारे के सारे atoms हाइड्रोजन के ही हैं? Atomic number is the identification of an element. So what would you do? You'll just pick a hydrogen atom and you will see the number of protons in the hydrogen atom. Of course, hypothetically speaking, let's say आमना ने हाइड्रोजन का एटम उठाया और उसमें देखे प्रोटॉन्स 1 है, तो उसने she confirmed me that it should be an atom of hydrogen element because it has an atomic number of 1. सही है। मैंने कहा कि आमना बेटा सारे देख लो इन केस। अच्छा, आमना ने क्या करा कि शी इज अ वेरी क्यूरियस स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ने क्या करा कि इंस्टेड ऑफ जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शी आल्सो स्टार्टेड काउंटिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो सम ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स हैड 0 न्यूट्रॉन। देखो, एक का मास नंबर था 1, but she found some hydrogen atom with a mass number of 2, and she found some hydrogen atom with a mass number of 3, and she told me some of the hydrogen atom has 1 proton but 0 neutrons, and some of the hydrogen atom they have 1 proton but they have 1 neutron as well. There are some hydrogen atom proton तो उनका अभी भी 1 ही है, but number of neutrons are 2. इलेक्ट्रॉन्स भी देखो सेम हो गया, अगर प्रोटॉन्स इक्वल हैं और कोई चीज एटम है तो जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब ये कंफ्यूज हो गई, इन्होंने बोला सर ये क्या चक्कर है, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब सबका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो ऑब्वियसली प्रोटॉन नंबर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। कहना तो हमें इसे हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम पड़ेगा, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली अब ये अब्दुल्ला को ना एक क्लोरीन का सैंपल पकड़ाया मैंने, I asked Abdullah again the same thing to ensure whether all the atoms are of chlorine element or not. तो अब्दुल्ला ने क्या किया, he started counting the chlorine atoms. He checked chlorine atom by its proton number. So all the atoms had a 17 number of proton. So he ensured me that sir all the atoms are of chlorine element. सारे chlorine के ही हैं. But इसने again Abdullah is also a curious student. अब्दुल्ला ने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करे, and he found out that some of the atoms have a mass number of 35 and some of the chlorine atom has a mass number of 37. इसने बोला सर ये तो पूरी केमिस्ट्री बर्बाद हो गई, हमने तो अभी पढ़ा था कि एटम्स क्लोरीन के जो एलिमेंट है उनका प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसे काउंट करते हैं, जहां तो वो अब मैं प्रोटॉन नंबर तो 17 है बट देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। इफ यू फाइंड द नंबर ऑफ protons in first chlorine atom it is 17, number of electrons are also 17, but number of neutrons are 35 minus 17 would give you how much? It would give you 18, right? But the other chlorine atom again it has 17 protons, electrons भी 17 है, लेकिन neutrons कितने आ रहे हैं इसके 20। समझ आई यहां तक बात? अब यस, पीरियोडिक टेबल में तो न्यूक्लियॉन नंबर 35.5 है क्लोरीन का, बेटा वही तो समझना है कि ऐसा क्यों है। देखो, अब आपने सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, दैट atomic number is the identification of an element. If any atom has a proton number 17, if it has 17 proton, that has to be an atom of chlorine element. End of discussion. आपने बोलना तो दोनों को क्लोरीन एलिमेंट का ही एटम है, but as they have different number of neutrons, तो फिर
सर पकड़ लिया साइंटिस्ट ने कि अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करें। तो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट दैट इन्होंने कह दिया कि दीज टू एटम्स आर दी आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन एलिमेंट। एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करा दी, दीज आर नोन एज आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन एलिमेंट। क्या सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं? यस, मोस्टली एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। कुछ हमें जो जो मिले हैं, ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम एटम हैज टू आइसोटोप्स, मैग्नीशियम एटम हैज टू आइसोटोप्स, क्लोरीन एटम हैज टू आइसोटोप्स, हाइड्रोजन एटम हैज थ्री आइसोटोप्स, राइट? सिमिलरली वी हैव मेनी डिफरेंट मेटल्स जिनके आइसोटोप 2 3 4 भी होते हैं। जिंक एटम हैज 5 आइसोटोप्स। एटम्स आर नॉट फॉर्मिंग आइसोटोप्स। अच्छा, ये बात अब बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। थैंक यू दिशा, यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। एटम इज नॉट फॉर्मिंग एन आइसोटोप। आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है, आयन बनता है। एटम फॉर्म्स एन आयन बट एटम्स डज नॉट फॉर्म एन आइसोटोप। देखो बेटा, हमें क्लोरीन एलिमेंट का एक सैंपल था भाई, मैंने एक क्लोरीन एलिमेंट कहीं से निकाला, मैंने कहा ये बस इसमें सारे क्लोरीन एटम्स हैं। ऑब्वियसली क्योंकि इन सबका एटॉमिक नंबर क्या था, 17 था। लेकिन जब मैंने इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करना स्टार्ट किए तो एक में न्यूट्रॉन्स जो है वो, कुछ में न्यूट्रॉन्स 18 थे, कुछ में न्यूट्रॉन्स 20 थे। तो जिसकी वजह से कुछ क्लोरीन एटम्स का मास नंबर था 35 और कुछ का था 37। मास नंबर इज द न्यूक्लियॉन नंबर, राइट? नहीं बेटा, हम ना आइसोटोप्स की नेमिंग याद नहीं करनी है आपको, राइट? सो आइसोटोप्स आर नॉट फॉर्म, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट। हम सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब हमने बोला भाई, बोलना तो दोनों एटम को क्लोरीन एलिमेंट के एटम पड़ेगा। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करें? व्हाई वी आर सपोज्ड टू call them an atom of chlorine element? Because atoms are identified or elements are identified from its atomic number. If both have the same atomic number, they have to be an atom of chlorine element. But if they have different number of neutrons, तो क्या हम उसको किसी और एलिमेंट का एटम कह देंगे? नहीं, वो क्लोरीन का ही है। तो हम उसको कहेंगे कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं। मतलब क्लोरीन एलिमेंट has two types of atoms. They have the same number of protons but different number of neutrons, and these are two known as isotopes of each other. You got my point, Disha? So atom is not forming an isotope. Isotope already exists. हम तो बस पढ़ रहे हैं कि क्लोरीन के कितने, हाइड्रोजन के कितने, सोडियम के कितने। Can we chemically create new isotopes? Yes, we can. Yes, we can, and we do. न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब में न्यू आइसोटोप्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। बट हम नेचुरली अकरिंग जो है अभी उनकी बात कर रहे हैं। सही है मारो? अच्छा, अब प्रोडक्ट टेबल देखो। देखो, a chlorine element has to be represented by one chlorine atom, right? दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है। अब इनमें से कौन से आइसोटोप को प्रोडक्ट टेबल में रखा जाए इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ क्लोरीन एलिमेंट? यस अब्दुल्ला, उसी तरफ आ रहा है। यू टेल मी अब्दुल्ला, which chlorine isotope should I keep in the product table in order to represent the chlorine element? अब क्लोरीन 35 भी है, क्लोरीन 37 भी है। If you put chlorine 35 in the periodic table, तो क्लोरीन 37 बुरा मान जाएगा, और क्लोरीन 37 को रखोगे तो क्लोरीन 35 बुरा मान जाएगा, राइट? 35 का रखा है। इफ यू सी द periodic table, तो क्योंकि इनकी लड़ाई होती ना फिर, तो हमने ना तो क्लोरीन 35 रखा ना 37 रखा। क्या रखा हुआ है यहाँ पे? देखो, it's not 35 or 37, it's 35.5. ओके, 36 रख लें। अच्छा, ऐसे ही रख लें, एवरेज ले लें। अब्दुल्ला, यू मीन एवरेज? एवरेज ले लें। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 35 or 37, लेट्स टेक द एवरेज ऑफ दीस टू, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। Oh, okay, Maruk is saying we should keep the commonly available isotope. Okay, that makes sense. मैथ्स में बेटा आप एक चीज पढ़ते हो, एवरेज, एवरेज वैल्यू। अब Maharuk, how would we know कि which isotope is more commonly available? उसका भी एक तरीका है। देखो भाई, we have two isotopes of chlorine, one with the mass number 35, the other one with the mass number 37. Now let's say if I give you 100 chlorine atoms, and out of 100 chlorine atoms I ask you to separate both the isotopes. Whenever I give you 100 chlorine atoms, out of 100 chlorine atoms, 30
25 chlorine atoms are those with mass number of 37 and 75 atoms are always those with a mass number of 35. अब क्या ये हमेशा ऐसे ही रहता है? Yes, near about इतना ही रहता है. If we find the percentage of all the atoms of chlorine with the mass number 35, percentage कैसे निकाल दो? 35 out of 100 into 100%, that would give you 35. Okay. How do you find the percentage? 75 atoms are of those with the mass number 35 out of 100. So you're gonna get 75%. And 25 atoms of chlorine are those with the mass number 37. If you find the percentage number of these isotopes, you will get 25 over 100 into 100. It would be 25%. अब क्या ये परसेंटेज हमेशा ऐसे ही रहती है? यस, हमेशा ऐसे ही रहती है. क्या ये याद करनी है? नहीं भाई, जितने भी एलिमेंट्स है प्रोडक्ट टेबल के सबके आइसोटोप्स होते हैं. क्या सबकी परसेंटेज याद करोगे? नहीं बेटा, आपको याद नहीं करनी. मैं करवाऊं दो की, बस क्लोरीन की और ब्रोमीन की, दैट्स इट. मैं करवाऊं, ठीक है, इजी हो जाएगा कुछ चीजें हमारे लिए. अभी कॉन्सेप्ट समझ आया? मतलब अगर मैं आपको क्लोरीन के 100 एटम्स दे दूं, अब डजंट मैटर वो क्लोरीन कहां से आया. अगर वो पाकिस्तान से लिया है मैंने, let's say if I have brought it from USA or Africa or Kenya or any part of the world, if we count the 100 chlorine atoms, out of those 100 chlorine atoms, 75% or 75 atoms are of those chlorine which have a mass number of 35, and 25 chlorine atoms are those with a mass number of 75. ठीक है. So now which chlorine isotope will be used to represent the chlorine element? तो अब अगर मैं 35 को रख दूं और 37 को रख दूं, अब मारूफ ने मुझे बोला you keep the isotope which is more commonly found. So which one is the more commonly found, which has a greater percentage, which is the 35 isotope. अब 35 नहीं रखा हमने, 35 नहीं रखा, अब 37 भी नहीं रखा हमने कहा कि भाई ये तो गलत बात है ना. If we just write chlorine 35 in the periodic table, तो वो जो 25% क्लोरीन के एटम्स है वो बुरा मान जाएंगे. तो फिर हमने अब्दुल्ला क्या किया? एवरेज लिया. ठीक है, और एवरेज वैल्यू कैसे लेते हैं? बिकॉज एवरेज क्या होता है? You just add up all the values and divide by the number of numbers. अगर मैं आपको कहूँ मेरे पास एक वैल्यू है 5, एक वैल्यू है 10, एक वैल्यू है 5, another is 15. You add these four values and divide it by 4. That's how you take the average, right? ये तो बड़ी सिंपल टेक्निक है एवरेज लेने की. When everything is in equal proportions, मतलब सब ही इक्वल परसेंटेज हो तो तब इस तरह से एवरेज लेते हैं. Now we have to take the average on the basis of the percentages. क्या मतलब है इस बात का? देखो, क्लोरीन 35 वाला 75% है और क्लोरीन 37 वाला 25% है. So we will use these percentages to find the average. And these percentages are known as isotopic abundance or relative abundance. ठीक है, इसको हम जरा लिखते हैं, isotopic abundance और relative abundance. And using these abundances, मैं लिख देता हूं, एक मिनट रुको. These are known as isotopic abundance. Abundance is another name for a percentage. इसको हम कहते हैं आइसोटोपिक अबंडेंस. किसको? ये जो 30, 75 और 25%. And how are we taking the average? 75% of chlorine with the mass number 35 and 25% of chlorine with the mass number of 37. Just solve it and tell me the answer. 35 and 37 न्यूक्लियन नंबर है, तो क्लोरीन के 35 periodic table में क्यों है? Ramin, 35 or 37 is the nucleon number, yes, but obviously number of neutrons should be in the whole number. You cannot have half a neutron. 35.5 का मतलब 0.5 एक न्यूट्रॉन हाफ कटा हुआ नहीं है. बेसिकली हमने एवरेज वैल्यू ली है, मैथमेटिकल एवरेज लिया है. If you just see, we have two isotopes of chlorine, one with the mass number 35, one with the mass number 37. तो हम आपने अब तक जो एवरेज लिया होगा, आपने ये वाला एवरेज भी लिया है मैथ्स में बेटा. अदरवाइज आप अगर आप 35 plus 37 divide by 2 कर दोगे तो you would get 36. But this is only possible if both the isotope had a percentage of 50-50%. 50-50 होती है तब इस तरह से एवरेज लेते हैं. They are not in the equal proportions.
मतलब अगर ये 50-50% होता तो 50/100 इंटू 35 एंड 50/100 इंटू 37, अगर हम इस तरह से करते तो 50/100, 51 जा 50, 52 जा 100, ये हो जाता 1/2 इंटू 35 प्लस again 1/2 into 37. If you take the LCM of it, like it's 35/2 and 37/2, the LCM between 2 and 2 would be 2. तो एवरेज फिर इस तरह से आ रहा हो, बट क्या ये 50-50% है? नहीं. We have to use the actual percentages, which is 75 and 25. 75% of 35 and 25% of 37, and this would give you 35.5, and that's what we have written in the product table. Product table mein we have written 35.5, which is the representation of both the isotopes of chlorine. समझ आई अब बात? इसको और डिटेल में अभी डिस्कस करना है, ठीक है? यहां तक we are calling it a day, but we will continue this thing, this concept from the next class. And how do we get these percentages? हमने experimentally find किए हैं. किस तरह से किए वो प्रोसीजर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, बट सिलेबस का पार्ट नहीं, ठीक है? यहां से आइसोटोपिक अबंडेंस से विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे. और बट up till next class, make sure you remember the definition of isotope and the concept of isotope, relative abundance and how to find the average mass, वो हम कंटिन्यू करेंगे from the next class. परसेंटेज आए कहां से? ये वो एक्सपेरिमेंट से आते हैं, हम निकालते हैं. Obviously, I gave you an example. If Amna is picking up an element or any atom of any element, तो वो hypothetically speaking कर नहीं सकता ना पिक वो पकड़ के उसको. Anik, it's okay. If you haven't understood isotopic abundance, we will again revisit abundances in the next class. तो वो हमने दोबारा से स्टार्ट करना है. थोड़ा सा टाइम बचा था, हमने टच कर लिया उसको, बट यहां तक मुझे बता दो, up till the definition of isotope, is everything clear? यहां तक सब क्लियर है? अनेक ओके, चलो आइसोटोपिक अबंडेंस दोबारा से करेंगे कमिंग क्लास में. रिवाइज करके आना. कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग जा सकते हो. डिफरेंट आइसोटोप्स को नेम देते हैं, कुछ जो फेमस आइसोटोप्स हैं ना उनको देते हैं. लाइक हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के डिफरेंट नेम दिए हुए, लेकिन हमें याद नहीं करने होंगे. हाइड्रोजन का मास नंबर 1 वाला आइसोटोप इज नोन एज प्रोटियम, then deuterium with the mass number 2 and tritium with the mass number 3. बट हमें याद नहीं करने होते हैं. एनीथिंग एल्स? दैट्स इट, बंद कर दूं? थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.